मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को कई वैश्विक नेताओं और टेक जगत की दिग्गज कंपनियों के सीईओज ने संबोधित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से की और अंत जय हो के साथ किया। उन्होंने मंच से भारत के डिजिटल मॉडल की खुलकर तारीफ की और कहा कि भारत ने जो किया है वो दुनिया में किसी और देश ने नहीं किया। मैक्रो ने मुफ्त डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई की भी काफी सराहना की। Ladies and gentlemen, namaste. Thank you very much for welcoming us in this magnificent city, in this magnificent country. 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. Here are the results. They call it the India Stack, open, interoperable, sovereign. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने संबोधन में कहा कि एआई का भविष्य मुट्ठी भर देशों द्वारा तय नहीं किया जा सकता और न ही इसे कुछ अरबपतियों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। Prime Minister Modi, thank you for your kind invitation and congratulations for India's leadership organizing the first AI summit in the Global South. Meeting in India has special meaning. It brings this conversation closer to the realities shaping much of the world. Because the future of AI cannot be decided by a handful of countries or left to the whims of a few billionaires. Be accessible to everyone. That is why, encouraged by the General Assembly of the United Nations, I'm calling for a global fund on AI to build basic capacity in developing countries. Skills, data, affordable computing power, and inclusive ecosystems. Our target is $3 billion US. That is less than 1% of the annual revenue of a single tech company. A small price for AI diffusion that benefits all, include businesses building AI. वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में बिताए अपने पुराने दिनों को याद किया। It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Visakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. When finished, this hub will house gigawatt-scale compute and a new international subsea cable gateway, bringing jobs and cutting-edge AI to people and businesses across India. Sitting on that train, I never imagined Vizag becoming a global AI hub. Just as I couldn't have imagined that one day I'd be spending time with teams figuring out how to put data centers into space. Or taking my parents for a fully autonomous car ride in San Francisco. Seeing a Waymo right through my 83-year-old dad's eyes, I saw the progress in a whole new light. Of course, he said he'd be more impressed if it worked on India's busy roads. Still working on that one, Dad. दरअसल पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत टॉप के टेक सीईओज ने गुरुवार को नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लिया।
भारत इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक की मेजबानी कर रहा है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।